Our today's topic is decimal facts. Let's move towards the topic what we know already about decimal and decimal facts. We are going to recall all those things in our memory and we will use and we will solve our question. Let's move towards our question number one. What our question number one is asking for. See, question number one, find the missing numbers. You can see there are three different parts, A, B, and C written here. In these parts, in first part A, you can see that two numbers are given and one number is missing. Similarly in B and C part. So what to do? We will solve in this way that we can find out the answer by using the given numbers with the help of the given numbers. So what are the given numbers here? You can see one is here and I'm going to solve part one for you. This is in the beginning, we will use in this way that we will use one because one is, you can see the symbol of equality is here and this question is given us in the form of equation and two numbers are given to us, one is missing. With the help of the two given numbers we will find the missing number. How we can find? We know that one is here, we can write one like this way, 1.0, because 1.0 means it is obviously that if the zero is written after the decimal point, it means that we can say that there is no value. This is just having acting as a position holder per digit. We can write 1.0 as 1.0 and 1 both are equal. So we are using the form of 1.0 to use or to solve or add or subtract the number given. आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ दो नंबर गिवन है 1 और 1.0 जो है वो दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं. हम यहाँ पर क्वेश्चन की वो फॉर्म लेंगे जो हमें हेल्पफुल होगी सॉल्व करने के लिए. दूसरा नंबर जो गिवन है दैट इज 0.7. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 0.7 बिलो दिस वन, 0 below the 1 and decimal below the decimal and 7 below the 0, and then we will go for the simple subtraction. For that purpose, you can see 0 minus 7 is not possible. So this 0 will borrow 1 from the other side and it will become 10 now. And 10 minus 7 will be 3 and we will write 3 here. Then decimal below the decimal, line up your decimal in such a way that it should be in the same line and same sequence. Then here you have seen that this one is already given to the other side. So 0 is left here. So 0 minus 0 will be 0. In other words, we can say the answer is simply 0.3. Again, I am repeating my question here. हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में तीन नंबर्स गिवन थे, एक 1, एक एम्प्टी बॉक्स और एक 0.7. हमने क्या किया, 1 के पास जो सिंबल ऑफ इक्वालिटी के दूसरी साइड है, हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन के स्टार्ट में 1 और इस 0.7 को इस 1 के पास ले जाएंगे. अगर हमारे पास ये प्लस का 0.7 है तो ये सिंबल ऑफ इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाने के लिए जब हम इसको लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. प्लस का साइन जो यहाँ नहीं लिखा था, अंडरस्टूड था कि प्लस 0.7 था, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे माइनस 0.7. जब हम 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो हम सिंपली इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे. डेसिमल फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे, 1.0 की फॉर्म में लिखेंगे 1 को, क्योंकि 1.0 और 1 दोनों एक ही बात है. लेकिन लिखने के लिए हमने इस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करना होता है कि पॉइंट्स को रिकॉल करना है मेमोरी में जो हमारे पास डेसिमल के थे. हम क्या करते थे, उसमें याद रखते थे that we are to write down the all the numbers in this way that one number should be another one and one should be, यानी कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के नीचे होना चाहिए. और दूसरी बात ये ध्यान में रखते थे कि डेसिमल पॉइंट शुड बी लाइन अप. डेसिमल पॉइंट्स को जो है वो लाइन अप होना चाहिए एक प्रॉपर वे में, जो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल और डेसिमल के नीचे डेसिमल है. और फिर सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं, वट एवर आर रिक्वायरमेंट इज. यहाँ पर हमें 1 माइनस 0.7 करना था, हमने 1.0 की फॉर्म में 1 को लिखा, माइनस का सिंबल लगाया, 0.7 को लिखा. इसके बाद हमें यहाँ पता है 0 में से 7 पॉसिबल नहीं था माइनस करना, इसने यहाँ से 1 बोरो किया और नंबर बन गया 10. 10 में से 7 को माइनस किया, अब ये नंबर हमारे पास 3 है. ये 0 माइनस 0 जो है 0 ही आंसर देगा और हमारा रिक्वायर्ड मिसिंग नंबर जो है वो 0.3 है या 0.3 है, दोनों बातें सेम होंगी. सिमिलरली आपने बी और सी पार्ट को खुद सॉल्व करना है. मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है इस तरीके से कि 1 के पास 1 इस सोल्यूशन के स्टार्ट में मैंने 1 लिखा और उसके पास इस प्लस वाले 0.6 को मैंने मूव किया तो ये माइनस 0.6 हो गया. 1 में से 0.6 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4. सिमिलरली सी पार्ट के मैंने 1 में से उस मिसिंग बॉक्स को जो फाइंड आउट करना था यहीं रहने देंगे. अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को इस तरह चेंज करेंगे, इस माइनस वाले
मिसिंग बॉक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस वाले प्लस वाले 0.3 को इस तरफ ले आएंगे। जब हम इनको इक्वलिटी के सिंबल्स के एक दूसरे के साथ में मूव करेंगे, इक्वलिटी के साइन के से राइट या लेफ्ट में मूव करते हैं तो साइन में चेंज आ जाता है। यहाँ पर प्लस का 0.3 था जो कि माइनस का 0.3 बन गया। अब 1 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7, जो आप लोग ऑलरेडी अभी कर भी चुके हैं इस तरह का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। जस्ट आपने माइंड में ये रखना है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखना है और नंबर को इस तरह से करना है, जब भी सिंबल ऑफ इक्वलिटी के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो उसके साइन को चेंज कर देंगे और दो नॉन नंबर्स को लेफ्ट हैंड पे ले लेंगे ताकि जो आपका मिसिंग नंबर है वो आपको राइट हैंड साइड पे सॉल्व करने के बाद मिल जाए। I hope this is clear to you all. Let's move towards our next question, which is question number 2. Similarly, we are going to do the same question as we have done question number 1. Here you can see two terms or two numbers are given in all these three parts. So first part, you can see 5.3 plus missing number is equal to 10. So what we will do, we will write 10. 10 as it is, we need to write, no, we will write it in the form of the decimal because 10 and 10.0 is the same. So we will write here 10.0 in the first row. After that, you can see number given to us is 5.3. It means we will use 10 and 5.3 to solve and to find out the missing number. हम क्या करेंगे, इस प्लस 5.3 को यहाँ 10 के पास ले जाएंगे तो इसका सिंबल जो था प्लस वाला वो माइनस में चेंज हो जाएगा. You can write it like this way in the solution, 10 minus 5.3. Now we are going to solve in this way that 5.3 should be below the 10.0. So here you can see decimal should be below the decimal and number should be below the number. Now we are going to solve. 0 minus 3 is not possible, so it will take 1 from this side and number will become 9 here because this number was already 0 and it has taken 1 from the other number. So this number 10 will become 9 and this number 0 will become 10. For this question, what we will do, 10 minus 3, we can solve here. 10 minus 3 is 7. And what happened here? Here is 9. Here is 5. So 9 minus 5 will be 4. And what we need to remember by the end of the question, we should remember that what we are doing, addition or subtraction, we should must write the symbol and we should must keep the decimal at the end of the answer. We are to write. It means we need to remember that by solving the question, by the end of the question, we must write the decimal point below the decimal. हमने नंबर को क्या किया, 10 और 5.3 को यूज किया है. 10 को हमने सिंबल ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हो या राइट साइड पे मौजूद हो, आपने नंबर्स को जब भी मूव करना है तो उनके साइंस को चेंज कर देना है. जो नॉन नंबर्स होते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं, उन्हें आपने एक साइड पे लिखना है और दूसरे मिसिंग नंबर को दूसरी साइड पर लिखना है. ऑटोमेटिकली आपका जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट होगा इस तरह से. लाइक 10 वॉज रिटन ऑन दिस साइड. इन द बिगनिंग ऑफ द सोल्यूशन हमने 10 को लिखा. 5.3 को जब हमने मूव किया इक्वलिटी के सिंबल की दूसरी साइड पे तो प्लस का 5.3 जो है वो माइनस का 5.3 बन गया. जब हमने सॉल्व इसको किया तो सिंपली हमने इसकी सब्ट्रैक्शन की है जो कि सिंपल प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन है और आंसर हमारे पास आया 4.7. आई हैव डन first part with the working and you are to do B and C part by yourself, but I have given you the solution here. The way I have done, you can see here 10 is here already written. So in the beginning you will write 10, then 0.7 was on this side. When we will move it towards the other side, it will change into the minus 0.7. So number is 10 minus 0.7. When you will solve it, the number will become, you can solve it like this way because number is 10 point, you will get your answer 9.3. You can see other way, the other part C, 10 minus missing number is equal to 3.9. What you will do, you will move this 3.9 to the other side of the symbol of equality. So this will become 10 minus 3.9. When you will go with the simple process of the subtraction, so you will find the answer 6.1 and these two parts you will solve with the working by yourself, that as we have done a part right now. I hope this is clear to you. Let's move towards the next question. Because this is simple subtraction and addition, just to keep in your mind how you are moving the numbers. See, here they said to find out the three numbers, that total is 1. So what we have done, we are going to find out the numbers. So what I have done here, 0.3 plus 0.3 is another one. Let's see the addition will give us the 1 or not. Then 0.3. You can see here
3 plus 3, because we are going to add, so we will write the symbol of addition and working. 3 plus 3 will be 6 and 6 plus 3 will be 9. So you will write 9 here. Is it okay? No. So it means that we should keep the number one more. So what we will do here, we will use here 4. It means 0 0.3, 0 0.3 and 0 0.4 as it is written here. First number is 0 0.3, 0 0.3 and then 0 0.4. Let's see. 3 plus 3 will be 6 and 6 plus 4 will be 10. So this will become 0 here and 1 here, and 1 plus 0 plus 0 plus 0 will give 1. And what to do, decimal point should be below the decimal. Here is a 1 decimal point, here is another decimal point, here is another decimal point, and you should write your answers in the same sequence. And below the decimal point, mark your decimal point, and you know that 1.0 is equal to 1, so we can write it like this way. So these are the three numbers, 0.3 plus 0.3 plus 0.3 plus, means 0.3 plus 0.3 plus 0.4 is equal to 1. They said to find out the number, three numbers, that total gives 10. Here you can see there two boxes are empty, this one and this one. And between them, you can see the decimal point is here. So what to do? We are going to find out the number in such a way that with three numbers we need, they are going to give us the answer, which should be equal to 10. Let's see what the numbers we have written here. First number is 3.3. Another number is 3.3. Then another number is 3.4. Let's do the addition. Decimal should be below the decimal, arranged in such a way, line up the numbers. One number should be in this way, that other number should be under the other number, but sequence should be lined up the decimal numbers. 3 plus 3 will be 6, 6 plus 4 will be 10, 0 here. Then 1 will be here. 3 plus 3 plus 3 will be 9 and plus 1 will be 10. So we will write 10 here. And decimal should be below the decimal, and you know that there's no value of this 0, so we can cancel it and we can know that this number will become 10 now. And here you can see the three numbers which we have chosen there are 3.3, 3.3 and 3.4. So total becomes 10, and these are the three numbers that makes total 10. And you are to do this working in this way as we have done. You can make working column and you can do the neat working in front of the question and do your working. I hope this is clear to you. Let's move towards the next question. Question number 4 is here. There are 4 parts, and first we will read the statement, then we will conclude that total will, where the numbers are, you see in the statement question is given what is the total of 0.6 and 0.4. It means total is shows that we are going to add the numbers, means we are going to add 0.6 and 0.4. So write the number in such a way that decimal should be below the decimal, and we know that 6 plus 4 will be, as the statement is asking for to total, so we will make the sum by addition. 6 plus 4 will be 10, 0 here, 1 here, and 1 plus 0 will be 1, 1 here. So decimal should be below the decimal, so don't forget to put the decimal in the answer. 1.0 is our answer, which is equal to, here you can see 0.4 plus 0.6 is equal to 1.0. This is our required answer. And second part question is asking what is the difference between 1 and 0.9. So what to do? We are going to find out the difference. Difference means we are going to subtract the number. 1 is the number which is a whole digit, and the other number is given in the form of a decimal form. So what we will do, we will write a question in this way, like 1 we can write in the form of a decimal 1.0. Because we are going to use 0.9 to subtract the 0.9, we will write the number 1 in the form of a decimal number. So 1.0 and 1 both are the same style, but writing the number 1, but we will choose the 1.0 because we are going to solve the subtraction by using 0.9, and we need to put the decimal below the decimal, so that is why we are using 1.0 in the form of question. You can see 1.0 is above and 0.9 is below, because 1 is the whole number and 0.9 is the fractional number. So integral or the whole number we will write on the first row and the fractional part in the second row. Then we will go for the subtraction. 0 minus 9 is not possible, so it will borrow 1 from this side, it will become 0, and this number will become
10, and 10 minus 9 is possible, so we can write 10 minus 9 will be 1, and decimal should be below the decimal, and 0 minus 0 will be 0, and our answer is 1 minus 0.9, that is 0.1. Here you can see, find the sum of the 5.4 and 4.6. Simply write your both numbers and go for the simple addition, because sum is asking for addition process of the your mathematical operation. 4.6, simply write your number, decimal should be below the decimal. 4 plus 6 will be 10, 0 here, 1 here, 5 plus 5 will be 10, so you can write here 10. And don't forget to put the decimal below the decimal, because decimal is after the one number, so you will write decimal here below this one. And you know that 10.0 is also means 10, so you can write this way, as I have written 5.4 plus 4.6 is equal to 10.0. Next question is D part, subtract 5.6 from 10. It means we are going to do like this way. 10 is a whole number. We will write it in the form of a decimal. 10.0 is also equal to 10. So we will choose this form of the number 10. Now we are going to subtract 5.6. So we will write the fractional number below this one. This is our 5 and this is our decimal 6, 5.6. They said to subtract. So what we will do, decimal should be below the decimal. So we will mark it prominently, and then 0 minus 6 is not possible. It will carry borrow 1 from this one, and 0 will borrow 1 from here. So what will this number will become now? This number will become 10, and other number will become, this will become 9. So you can write like this also. 10 minus 6 will be 4, and 9 minus 5 will be 4, and decimal should be below the decimal. So our answer is 4.4. In this way, you can solve your working in front of each part by using your working column. I hope this is clear to you all. This is all simple addition and subtraction, but you should keep in your mind that while doing your work, what to do, the number should be in the same form. If you are going to add this fractional number, like this way, you can see 0.6 and 0.4, both are in the same style of the writing of the fractional part. You can go with the simple working like this way. If the number is in the form of the whole number or fractional part in different way, convert them in the same way. Like you can write your whole number, आप अपने उस whole number को fractional part में लिख सकते हैं. Like 1 को हम 1.0 लिखेंगे तो वो fractional part में भी show करेगा. तो हम 1 की वो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट को शो कर रही है, ताकि हम इसकी सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते हुए डेसिमल पॉइंट्स को लाइन अप कर सकें एक सेम लाइन में. इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल 1 नहीं लिखा, मैंने यहाँ इसको 1.0 लिखा है, ताकि मैं डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखकर सब्ट्रैक्ट कर सकूँ. सेम केस हमारे पास सी पार्ट में ऑलरेडी 5.4 और 4.6 जो है ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट में गिवन है. तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को सेम स्टाइल में लिखकर इसको ऐड करना था, तो सिंपली हमने प्लस किया है और हमारा आंसर 10.0 आ गया. और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हम उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्मेट गिवन होगी. दोनों नंबर्स को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is very interesting one. They said to copy the diagram, write the number in each circle so that the number along each side of the square have the same total. यहाँ अगर हम गौर से देखें हमारे पास 3 नंबर गिवन है. यहाँ पर 2 + 7 9 + 1 पॉइंट, इट मीन्स नंबर इज 1. यानी हम अगर तीनों को नंबर्स को प्लस करें, यहाँ पर 0.7 0.2 और 0.1 को, हमारे तीनों नंबर्स जो है इसमें हमारे पास एक नंबर 1 बनता है. हम यहाँ पर अगर देखें तो इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 0.25, 0.5 और 0.2 हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.7. इसमें हम 0.3 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास नंबर टोटल बन जाएगा 1.0. इस मीन्स यहाँ पर 0.3 मिसिंग है. यहाँ पर 0.5 में 0.1 प्लस करेंगे तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 0.6. अब 0.6 में क्या प्लस करेंगे नंबर 1 बन जाए. हम 0.6 में 0.4 प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो 1 बन जाएगा. हम यहाँ पर 0.4 लिखते हैं. इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ 0.4 मिसिंग है
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं 0.3 और 0.4 मिसिंग है, तो यहाँ हमारे पास कौन सी टर्म मिसिंग होगी, 0.3 मिसिंग होगी, क्योंकि 0.3 प्लस 0.3 0.6 हो जाएगा, और 0.3 में जो हम 0.4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1.0 या 1 के इक्वल आएगा। लेट्स सी आवर आंसर्स ऑन नेक्स्ट स्लाइड, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन सी हियर फर्स्ट रो, यू कैन सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, इसके चारों साइड्स गिवन है। फर्स्ट जो साइड हमारे पास रो की फॉर्म में गिवन थी उसमें 0.2 प्लस 0.7 प्लस 0.1 किया तो हमारा आंसर 1.0 आया है। अब हमने सेकंड को सॉल्व करने के लिए 0.5 0.2 को प्लस किया तो हमें इसमें 0.3 प्लस करने से 1 के इक्वल आंसर मिलता है, क्योंकि हमें इसमें नंबर्स इस तरह फिल करने के चारों और साइड्स पे जो आंसर हैं तीन तीन नंबर्स के वो 1 के इक्वल आए। तो हमने दूसरे नंबर देखे 5 + 2 7 और 7 + 3 1, यहाँ पर हमारे पास 1.0 की फॉर्म में आ जाएगा। 7 + 3 10, जो कि हम इस तरह लिखेंगे 1.0 की फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास नंबर है 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.4। हम 5 में 1 को प्लस करते हैं तो 0.6 है। हम यहाँ पर एक में लाइक दिस वे वी कैन सॉल्व हियर आल्सो, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 0.1 0.5 एंड 0.4, अगर हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 के लिए हम 0 यहाँ लिखेंगे दिस वे, और 1 हमारा यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे, और 1 + 0 विल बी 1, डेसिमल शुड बी बिलो द डेसिमल, सो नंबर विल बिकम 1.0। इस तरह से हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करके देख सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स को चाहे हम इस तरह से प्लस करें या ऐसे प्लस करें और या इस तरह से डाउनवर्ड प्लस करें, चारों साइड्स के जो तीनों तीनों नंबर्स हैं उनको प्लस करने से हमें आंसर हर दफ़ा सेम मिलता है, लाइक 1.0 1.0 1.0 1.0। Here you can see what are the numbers. First में 0.2 0.7 and 0.1 was given to us. इससे हमें पता चला कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर टारगेट जो है 1.0 होना चाहिए। इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो जो दो नंबर हमें गिवन थे हमने उनको प्लस किया 0.2 0.5, तो अब ये हमारे पास नंबर बना था 0.7। 0.7 में हम 0.3 प्लस करेंगे तो हमारा नंबर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ 1.0। इसका मतलब हमारा मिसिंग नंबर जो था वो 0.3 था, जो हमने यहाँ सर्कल में लिखा भी है। सेकंड में आप देख सकते हैं 0.1 और 0.5 बस गिवन, हमें इसमें क्या प्लस करना होगा, 0.6 में 0.4 प्लस करना होगा, तो हमारा मिसिंग नंबर क्या था, 0.4 था। जब हम तीनों को टोटल करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर 1.0 बन जाता है। लास्ट में हमारे पास दो नंबर मिल गए थे जो कि 0.3 और 0.4 है। यहाँ पर हमें 0.3 मिला था और यहाँ हमें 0.4 मिला था। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारा नंबर बना 0.7। अब 0.7 में हमने प्लस किया 0.3 को तो हमारा नंबर कंप्लीट हुआ 1.0 के इक्वल। इस तरह से आप इसको प्लस भी कर सकते हैं और इसके कंप्लीट स्टेप्स को कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। What is your homework? Let's see your homework slide. Your homework is to do a neat mathematics copy, decimal facts, and page number is 53. Question number 1, question number 2, question number 3, 4, and 5. That's all for today.